अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 4.3। तो हम इसे कॉपी करके स्टार्ट करते हैं। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको चीजें आप काफी डिफरेंट दी गई हैं, ठीक है। तो पिछली दफा जो था आपके पास, इधर मैं लिख लेता हूँ कि जेनेरिक स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं आप एल से, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। एल से आप निकालते हो हाइट, हाइट से आप निकालते हो विड्थ, और फिर इन दोनों से आप निकालते हो सेल्फ वेट। फिर उससे हम जाते हैं स्टेप टू में। स्टेप टू में फिर आप निकालते हो डब्ल्यू, डब्ल्यू से आप निकालते हो एम यू। स्टेप थ्री, एम यू से आप निकालते हो आर एन, आर एन से फिर आप निकालते हो रो, और फाइनली रो से फिर आप निकालते हो ए एस। आर एन के लिए आपको फिर एच से या इस वैल्यू से आपको एक और वैल्यू भी मिलती है जो कि है डी, and this D comes in when you're trying to calculate Rn. ठीक है, so these are the general steps for design. अब इधर जो है typically हमें लेंथ दी हुई होती है, इधर there is no length if you notice. Instead आपको एक रो की वैल्यू दी हुई है, mu दिया हुआ है, और फिर fy और f dash c दिया हुआ है। So the interesting thing here is कि typically हम क्या कर रहे होते हैं, हाइट और विड्थ निकाल रहे होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, एक बीम डिजाइन करने के लिए यू जस्ट नीड फोर थिंग्स, ठीक है। यू नीड टू नो the width, the height, the area of steel, and the depth. तो इधर हमें थोड़ा सेपरेट चलना होगा, because here you have been provided rho and mu. So what does mu give you? अगर हम देखें, mu gives you Rn, because Rn is u over p b d square. मगर इधर you cannot get Rn because these two are unknown. तो फिर क्या करना होगा? तो बट इंस्टेड हमें रो दिया हुआ है, एंड टिपिकली हम क्या करते हैं, हम रो से, सॉरी, हाँ, हम आर एन से रो फाइंड करते हैं, बट हियर वी ऑलरेडी गिवन रो। इंस्टेड ऑफ गोइंग द राइट वे डाउन, जैसे हम इस तरह जाते हैं, वी विल ट्राई टू गो द अदर वे। AS, well, to get AS, you need to also know the B and D, so we cannot do that right now. But what we can do is that we can go down this step, then we can go down this step, right? इसके लिए अगर आप नोट्स देखें, आपको एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है। नोट्स में सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि आर एन की एक तो रो की इक्वेशन होती है। इफ यू वांट टू फाइंड रो फ्रॉम आर एन, यू यूज दिस इक्वेशन। अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइंड आउट आर एन फ्रॉम रो, देन यू यूज दिस इक्वेशन। हम ये जरा कंट्रोल से कॉपी पेस्ट लेते हैं इधर, एंड देन लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। इफ यू लुक एट दिस, इन अदर वर्ड्स, इसको अगर हम रीराइट करें इधर, you have Rn is equal to rho Fy 1 minus 1 over 1.7 rho Fy Fc. So to get Rn, all you need is rho, Fy, and Fc. We have all three values, right? So we have, हमें रो दिया हुआ है 0.012, और Fy दिया हुआ है 60 of course. So why don't we try finding Rn, right? So हम बोलेंगे 0.012 times 60,000 over 1 minus 1.7, 0.012 times 60,000 over 4,000. And when we calculate it, we get Rn is equal to 643 dot 777. Up, now that we have Rn, what is the equation of Rn? Rn is mu over pbd squared. In other words,
643.77 is equal to MU हमें है provided है, it is 600 and that is in feet cube, so that will be 12,000. Phi we assume as 0.9 times BD square. So from here, what we can do is that we can try to find out BD square. So हम इसे ऊपर ले जाएंगे और 643 नीचे ले आएंगे. We get 600 times 12,000 over 0.9 times 643.977. And then BD square will come to 1246.9 inch cube. So here, because these are two variables, we can't exactly solve it using normal methods. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि we start making a table. हम B रखेंगे, हम D रखेंगे, and BD square की value, right? And then we just start doing random. इधर हम थोड़ा सा random लेके चलते हैं. So let's say, like if you want to start, I would say, okay, let's try starting with 24. ठीक है, B को उसका half रख के देखते हैं, just right now. So let's see कि what is this value. Basically what हम जो करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम at least 124 to 6.9 लेकर आना चाहिए. So this is 6912. This is way too less. तो ये तो नहीं हो सकता. Let's try 28 and 14. 10 times 28, 10,976. This is still too long. जैसे मैंने इधर 4 inches बनाया था, let me try 32 by 16. That is 16 something something something. So this was less, this is way more. So basically that tells us कि हमारी जो BD square जो इसको fit करेगा, it will be somewhere between 28 and 32. So we can try going 15 by 30. 13,500. So it's slightly more. Uh, 29 I'm not be comfortable with. You can remember it says that our values multiples of 2 and 3 में रखते हो, चाहे वो आपका D का हो या आपका width हो, right? So I'm not comfortable with that. मगर I'm also not happy with this. It is a multiple of 3, but I think it's a bit too, क्या बोल सकते हैं, it's odd number. ठीक है, I prefer कि even number हो. So let me try 14. 12,600. Now this is very close to 12,427. इनफैक्ट मुझे लगता है अगर हम 1-2 इंच ऊपर जाए तो ये वैल्यू काफ़ी बदल जाएगी और वी कांट रियली गो 1 इंच, हमें 2 इंच जाना होगा ऊपर. ये 32 हो जाएगा एंड आई बिलीव 32 से वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी और इसको कम करेंगे तो वो भी, आई डोंट बिलीव इट्स नेसेसरी. तो आई एम गोइंग टू गो विद दिस. So I'm comfortable with this. I would say कि आ, जब ये है तो अब मैं क्या करूँगा, now that I figured out कि I'm gonna keep my width as 14 and my depth, यानी आपका डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 30 इंचेस हाइट का होगा. इसमें आप 2.5 ऐड कर लो तो 32 आता है. 32.5 आएगा राइट फ्रॉम 30. बट मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 रखूँ. तो जब मैं वो रखने की कोशिश किया तो फिर ये आई वुड से इट्स 34 around that. I'm happy with 34. 33 is an odd number, 31 is an odd number, 32.5 is not a multiple. 32 कम कर रहे होंगे हम इससे, तो I'd keep it at 34. और फिर एरिया ऑफ स्टील जो है आपका फिर आपके पास आ जाएगा, if you want to use this, तो then your area of steel become rho BD. अच्छा, but the thing is when we use this value, um, हम रो कहाँ से निकालते हैं, we get rho from Rn. Previously
हमारी आर एन थी 643, बट अब चेंज हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि द वैल्यू दैट वी हैव इज एक्चुअली दिस वन। तो लेट्स recalculate आर एन। mu ओवर सी बी डी स्क्वायर। mu हमारा था 600 टाइम्स 12,000, 0.9 टाइम्स बी डी स्क्वायर हमारा है 12,600। आर आर एन ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है साइड पे। सो आर एन 634.9, अप्रोक्सीमेटली 635 पी एस आई। तो व्हाट आई डू नाउ कि एक्चुअली लेट मी डबल चेक। मुझे लग रहा है कुछ और है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 टाइम्स 6, सही है 635। हैप्पी विद दैट। तो इसमें देन our row would become once again 0.85 HC. The equation, I would suggest कि आप कंफर्टेबल है इन दोनों आर एन और रो से, क्योंकि ये बार बार आती हैं हमारे पास। तो इसमें मैं प्लग इन करूँगा फॉर मी, क्योंकि इतनी दफ़ा मैं ये कर चुका हूँ एक्सरसाइज कि मुझे याद हो गई है। बट आई कैन गारंटी यू आप 4-5 दफ़ा अगर ये खुद ही करें सॉल्व, आपको भी इक्वेशंस याद हो जाती हैं। एंड इट्स मोर यूजफुल कि आप उनको याद करके रखो अपने पास, ठीक है? So when you use this, my P is 0.0118, ठीक है? तो 118 इट्स फाइन आई गेस। इट्स जो हमें दिया गया था रो दैट्स 0.012, इट्स अ बिट लेस देन दैट, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई से कि चलो इससे मैं एरिया ऑफ स्टील निकालता हूँ, which is rho BD, जो हो जाएगा आपके पास 0.0118 times 14 times 30, that will give you 4.96 inch square। तो हम इसे राउंड अप करके 5 इंच स्क्वायर कर सकते हैं, which is good, क्योंकि 5 इंच स्क्वायर means you can say 5 number 9 bar। ठीक है, ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो व्हाट नाउ, एक दफ़ा ये हो गया तो वी कैन एक्चुअली रिकैलकुलेट। अब क्योंकि आपने एस से तो चेंज किया, अगर आप एस कर रहे हो, सो देन योर न्यू रो वुड बी एस ओवर डी 5 डिवाइडेड बाय 30, 0.119, वेरी क्लोज टू 0.012। एंड दिस इज आइटरेटिव, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के दोबारा कर सकते हो, and you can just double check, and that's it. So your final design is a 14-inch by 34-inch beam with 5 number 9 bars at a depth of 50 inches. Okay, let's move to the next question.